weak acid or weak base being dissolved in water. अच्छा, एक सेकंड, यहाँ ऊपर में मुझे एक छोटी सी चीज कर लेने दो। ये सारे फॉर्मूले के थ्रू हमको H3O प्लस का कंसेंट्रेशन मिल जाता है। ये क्या बोलते हैं, OH माइनस का भी कंसेंट्रेशन मिल जाता है वंस वी नो दैट। तो pH will be equal to minus log H3O plus। H3O plus क्या हो जाएगा यहाँ पे? It's going to be, basically it's going to be equal to C, isn't it? Where C is the concentration of strong acid. So this will become minus log C minus log C. POH क्या रहेगा? POH will be equal to, इस इक्वेशन को अगर हम यूज करेंगे तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन जो होगा माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, minus log of OH minus is equal to KW by C. That is going to be equal to minus log of KW by H3O plus minus log KW minus का minus minus of minus of log. This thing is pKW and this will become minus pH. So POH will become pKW minus pH. And second वाले scenario में जब B base को we are putting in the concentration of POH, that is minus log hydroxyl ion concentration, is going to be equal to minus log C. And pH जो होगा that will be minus log H3O plus, which is going to be given as minus log KW by OH minus, or this can also be written as minus log KW minus of minus log PKW minus POH, which is nothing but minus log C. So POH को minus log C से अगर replace करते हैं, it will become PKW plus log C. और यहाँ पर इस चीज को अगर replace करेंगे तो PKW minus, so minus plus log C. C is the concentration of acid, ये concentration of acid है और ये concentration of base है. C is
ये आई मीन दीज आर इक्वेशंस जिनको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो कि नॉर्मल एग्जाम मतलब MHAT जेई मेंस तक, ठीक है, these are the formulae which are going to be your rule book for calculation of pH and pOH। ठीक है, एडवांस के लिए नहीं बोल सकते हैं ऐसा, एडवांस में इट इज दिस रिलेशनशिप जो हमको मतलब ये डेरिवेशन प्रोसेस जो है ना, दिस इज समथिंग जो आप जिसका कमांड हमको रहना चाहिए, वी शुड बी एबल टू डेराइव दिस इक्वेशन और यूज दिस इक्वेशन whenever required। ठीक है, if required we should be prompt to use this particular equation। making sense? बाकी एग्जाम्स में we can peacefully use this one and we will be mostly getting all our uh, this thing done। like, इससे हमारे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। okay, uh, the next case I was about to discuss was okay, first weak acid in weak acid dissolved in water। See, weak acid HA, if it is being dissolved in water, H3O plus A minus aqueous, let us say initially this is initial concentration C 100 at equilibrium, alpha amount of it, yeah, at equilibrium DOD of acid is alpha। Alpha is going to be small क्योंकि ये weak acid है। अगर स्मॉल नहीं रहता है तो कुछ सिंप्लीफिकेशन है जो होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, but that they are going to come later। C into 1 minus alpha and this will become C alpha and this will become C alpha, therefore A will be equal to C alpha square by C into 1 minus alpha। यहाँ पर we can get this equation and then we can put this into the next equation, that is hydrolysis or autoprotonation of water। So let us assume we have this one and simultaneously the other reaction which will be taking place will be H2O twice giving us H3O plus plus OH minus। Now initial for this is
1. For this it is going to be C alpha. This it is going to be 0. ठीक है. और at equilibrium, suppose X amount of water got dissociated, तो ये तो X ही रहेगा at equilibrium. Let X amount of H2O dissociated, then H3O plus will become C alpha plus X, and this will become X, and there will be another equation. Kw is equal to concentration of H3O plus into OH minus is equal to C alpha plus X into X. So we have two relationships. एक से C अल्फा की वैल्यू हमको आती है, पहले अल्फा की वैल्यू, सॉरी एक चीज मिस हो गया. इस इक्वेशन में देयर इज वेरी स्मॉल मिस्टेक. यहाँ पर C स्क्वायर रहेगा and C alpha into C alpha divided by C into 1 minus alpha. C square will be divided by C to make C alpha square 1 minus alpha. ये 1 रहेगा. इससे बेसिकली हम लोग अल्फा कैलकुलेट करते हैं. अल्फा कैलकुलेट करके अंदर वी गेट सी अल्फा की वैल्यू, और सी अल्फा की वैल्यू में सी मतलब सी अल्फा की वैल्यू अगर बहुत स्मॉल नहीं है, ठीक है ना, बहुत स्मॉल मतलब 10⁻⁻7 के आसपास जब तक नहीं है. बात समझ में आ रही है? न्यूट्रल वाटर के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर ले रहे हैं तो तक H2O H3O प्लस कंसेंट्रेशन एंड OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन दोनों का कंसेंट्रेशन जो होता है वो 10⁻⁻7 के राउंड अबाउट होता है. ठीक है. और 7.0 कंसेंट्रेशन 10⁻⁻7 के आसपास रहता है, एंड पीएच वैल्यू या पीओएच जो होता है दैट इज अगेन इक्वल टू 7. कंसेंट्रेशन 10⁻⁻7 के बराबर रहता है और H3O प्लस एंड OH माइनस का. ठीक है. और एसिड डालने की वजह से, यानी ये C और इस एक्सप्रेशन से, if C alpha is coming close to 10⁻⁻7 by any way, ठीक है, तो फिर और क्लोज का मतलब it should be in the range of 10%. ठीक है. मतलब अगर H3O ये H3O plus due to HA 10⁻⁻7 now 10⁻⁻6, ठीक है, या इससे बड़ा greater than 10⁻⁻6, एनीथिंग ग्रेटर देन 10⁻⁻6, ठीक है ना, तो फिर H3O प्लस जो है ना, ये वाला इक्वेशन, दिस विल मेक नॉट मच डिफरेंस. अल्फा विल X will not be a substantive value compared to C alpha, and therefore वो पिछला वाला केस जो है ना, that will keep on happening. Are we getting this point? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि C अल्फा की वैल्यू अगर 10⁻⁻6 इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एंड अल्फा की वैल्यू सी अल्फा की वैल्यू अगर 10⁻⁻6 से बड़ा है, तो फिर
OH माइनस का कंसेंट्रेशन जो होगा दैट विल बी सिंपली बी, आई मीन उसके लिए फिर इस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन एक्स विल नॉट बी मैंडेटरली रिक्वायर्ड बाय यू टू सॉल्व, ठीक है। तब फिर आप सिंपली H प्लस ये X जो होगा वो इग्नोरेंट रह जाएगा, it will be ignored, and H3O plus will remain as C alpha, and C alpha KW by C alpha करेंगे तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन आ जाता है। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? और एनी प्रॉब्लम? हेलो? Yes, sir. ओके, so let me go to the next page. Beautiful.
ठीक है। और ये 10⁻⁻⁶ जो है लिमिट, ये कहाँ से आता है एक्चुअली? देखो, वाटर के थ्रू जो सेल्फ डिसोसिएशन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है, दैट कैन बी एट मैक्स व्हाट, 10⁻⁷, and 10⁻⁷ is 10% of this number. 10⁻⁻⁶ का 10%, 1/10 जो है, that is self dissociation of water. ठीक है। सो वीक एसिड के थ्रू कंट्रीब्यूशन अगर सी अल्फा इक्वल टू 10⁻⁻⁶ से छोटा आ रहा है, दैट मीन्स H3O प्लस का contribution from self dissociation of water is eventually going to be lesser than 1/10 of the value which is coming from this. Are we getting this? इसके 1/10 से कम कंट्रीब्यूशन इसका हो रहा होगा, एंड देयरफॉर इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स 11 में एक को, सॉरी 10 में 1 को ऐड करें या ना करें, makes not much difference, that is, या 10 में 0.5 ऐड करें या ना करें, 10 को 10 रहने दें या 10.5 रहने दें, डिवीजन के टाइम पर अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना और 10.5 से डिवाइड करना हो, आंसर जो होंगे, द डिफरेंस इज नॉट दैट ग्रेट। एम आई मेकिंग सेंस? द डिफरेंस इज नॉट दैट ग्रेट। They can be treated to be equal, that is, any number divided by 10 and any number divided by 10.5, the answers are not going to be much different. Making sense? Okay. Now a weak base, एक छोटी सी चीज और यहाँ पे, तो सी अल्फा जब हम लिखते हैं इसको ना, H3O plus net is equal to, should be then equal to C अल्फा, और अल्फा जो होगा, if alpha is less than or equal to 0.05, ठीक है, then 1 minus alpha can be treated as 1, ठीक है, और ऐसे सिनेरियो में ये अल्फा जो है फ्रॉम इक्वेशन 1, ये यहाँ पे कैन बी कैलकुलेटेड एज, ये इक्वेशन जो लिया है मैंने, इक्वेशन 1 हमने निकाला है, इसमें 1 माइनस अल्फा को अगर मैं 1 कर देता हूँ तो अल्फा विल बिकम इक्वल टू के बाई सी रूट अंडर, देन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई सी, और अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई सी। इसको यहाँ पे मैं रख सकता हूँ सी इंटू रूट अंडर के बाई सी, विच इज इक्वल टू रूट अंडर सी के ए, ठीक है। concentration of H3O plus net pH क्या हो जाएगा, pH will be minus log concentration of H3O plus net, that is minus log of root under C into K, that is minus log, sorry, this will become root हटेगा तो it will become 1 by minus 1 by 2 into log C plus log Ka,
या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं ये माइनस लॉग के जो है, माइनस लॉग के कैन बी ऑल्सो रिटन एज पी के ए माइनस, और ये हाफ तो रहेगा ही, so half can be written outside pKa minus log C, where C is concentration of weak acid, right? So pH का डायरेक्ट फॉर्मूला जो हम यूज कर सकते हैं वो क्या है, ये वाला है, बट इट इज derived अंडर टू कंस्ट्रेंट्स. पहला कंस्ट्रेंट क्या है, this one, this is the first constraint. ये pH तभी होगा जब ये चीज ट्रू होगा, दैट इज अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1. अगर ये ट्रू नहीं है देन ये सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है. एम आई मेकिंग सेंस? सी अल्फा वाला अल्फा इज इक्वल टू के बाई सी जो सिंप्लीफिकेशन है दैट विल नॉट वर्क. ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, दिस इज द सेकेंड assumption, H3O plus due to acid dissociation must be greater than 10 to the power minus 6. If it is not greater than 10 to the power minus 6, suppose 10 to the power minus 7 के close आता है, so then this thing will start playing some role. This will start playing some role, and ये फिर second वाले equation को हमको use करना पड़ेगा in order to derive the values. ठीक है? Are we getting this point? Let us see an example. अच्छा, पहले बेस के लिए सेम डेरिवेशन कर लेते हैं. वीक बेस being dissolved in water. The equations will be BOH plus H2O, giving us B plus aqueous and OH minus aqueous. Initially, C1 0 0 at equilibrium. Let DOT is equal to alpha. Then BOH will become C into 1 minus alpha. This will remain 1. This will become C alpha. This will become C alpha. ठीक है, and obviously हम Kb is equal to concentration of B plus into concentration of OH minus by undissociated BOH, which is equal to C alpha into C alpha divided by C1 minus alpha, which is equal to C cancel C into alpha square by 1 minus alpha. This is 1. The second parallel equation which will be going on will be twice of H2O giving us H3O plus plus OH minus of initial. This is going to be 1. This is going to be 0 for initial case, and this is going to be C alpha at equilibrium. Let X amount of H2O decomposed. This
this will remain X, this will become X, C alpha plus X, and another equation, equilibrium equation, Kw is equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus, that is X into C alpha plus X. This we will try to calculate. Depending upon its value, we are going to have the final equilibrium value, final equilibrium value. ठीक है. However, इसमें एक चीज हमको ध्यान में रखना होगा, मतलब ध्यान में रखना होगा क्या, मतलब अगेन वही ऊपर में जो कैलकुलेशंस हमने किए थे और जो अप्रोक्सीमेशंस रखे थे वही सेम अप्रोक्सीमेशंस यहाँ भी रहेगा. ठीक है. और the point pertaining to it will be if OH minus contributed by dissociation of base is greater than 10 to the power minus 6, equal to 10 to the power minus 6, then the OH minus contributed by self dissociation of water becomes negligible. ठीक है. H3O plus, sorry, OH minus net which is in general equal to OH minus from dissociation of base plus OH minus dissociation of H2O. This will become negligent, so this will become OH minus dissociation of base if concentration of OH minus dissociation of base is greater than 10 to the power minus 6. Is this okay? And then yes, accordingly the pOH ये वाली वैल्यू हम लोग इक्वल टू सी अल्फा रख लेंगे. सॉरी, it will be equal to C. This will be equal to C alpha, but alpha की value will again come from the equation 1 which is there. ठीक है. Alpha की value will come by solving equation 1 which is written over here. Now point is यहाँ पर फिर से अगर alpha जो है much less than 1 है, if alpha is much less than 1, so concentration of OH minus net will be C alpha if this thing is holding. So this is the first condition. The second condition which we generally apply is if alpha is much lesser than 1, that implies
1 minus alpha will be equal to 1. And then Kb will be equal to C alpha square. That implies alpha is equal to Kb by C root under. Therefore, concentration of OH minus net will be equal to C alpha, that is alpha, that is equal to C into root under Kb by C, which is equal to root C Kb. OH is equal to minus log of OH minus, which is equal to minus log root C Kb. That is equal to minus 1 by 2 into log C plus log Kb, or this is equal to minus half log Kb minus half log C. This is this is half of Pkb minus half log C. Okay. pH निकालना रहेगा. pH in this scenario will be pKw minus POH. Okay. That is equal to pKw minus half pKb plus half log. ठीक है. We can take an example as a question. So let a weak acid having concentration 0.1 molar and dissociation constant equal to 10 to the power minus 5 is dissolved in water. Okay. So the calculations will simply go like this. Ha plus H2O giving us H3O plus A minus. Now the thing is the concentration of initial concentration C, which is equal to 0.1. This is 1, 0, 0 at equilibrium. DOD equal to alpha. This is going to be 0.1
into 1 minus alpha, 0.1 alpha and 0.1 alpha. Therefore, Ka, which is equal to 10 to the power minus 5, will be equal to concentration of H3O plus A minus, into A minus divided by Ha, which is equal to zero point 0.1 alpha into 0.1 alpha divided by 1 minus alpha. 0.1 यहाँ भी रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा. Therefore, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, ये 0.1 इधर कैंसिल होकर के 10 to the power minus 4 बनेगा. This is equal to alpha square by 1 minus alpha. इसको देख के हमको ये पता चलना चाहिए कि अल्फा जो होगा वो 10 to the power minus 1 से छोटा होगा. ठीक है, क्यों छोटा होगा? क्योंकि अल्फा स्क्वायर जो है, अगर इसको मैं नेग्लेक्ट करता हूँ तो अल्फा स्क्वायर क्या आ जाए, अल्फा स्क्वायर 10 to the power minus 4 हो जाएगा, अल्फा 10 to the power minus 2 हो जाएगा. That is definitely less than 10 to the power, sorry, 0.3, 0.03 या 0.05 से ये छोटा नंबर है. ठीक है, अल्फा क्या होगा? If 1 minus alpha is assumed to be equal to 1, then alpha will become equal to root under 10 to the power minus 4, which is equal to 10 to the power minus 2, that is 0.01. Okay? And therefore, our assumption that 1 minus alpha is equal to 1 is true. Is it okay? If it's true, then fine, we can do that. Is it okay? ये बात समझ में आ रही है? मान लो यहाँ पर 10 to the power minus 4 ना करके 10 to the power minus 2 आता. ठीक है, रूट अंडर जो है 10 to the power minus 2 आता, this value would have become 10 to the power minus 1. That means 0.1. This number would have been 0.1. अब can we say that 1 minus alpha is equal to 1? No. In this case, 1 minus alpha will be equal to 0.9. Making sense? फिर मैं 1 माइनस अल्फा को 1 से इक्वेट नहीं कर सकता हूँ. क्यों? क्योंकि अल्फा जो है वो एक सब्सटेंशियल वैल्यू हो गया कंपेयर टू 1. मेकिंग सेंस? आई होप दिस मस्ट बी मेकिंग सेंस टू यू गाइस. और यहाँ ठीक है, और ये अगर होल्ड ट्रू करता है, दैट इम्प्लाइज this calculation is very much true. That implies alpha is equal to 0.01. Next thing, H3O plus concentration from acid dissociation is equal to C alpha, where C is equal to 0.1 and alpha is equal to 0.01, that is equal to 0.001 or 10 to the power minus 3. Now 10 to the power minus 3 is much lesser than 10 to the power minus 6. Okay, or 10 to the power minus 7, which is generally contributed by H3O plus under neutral circumstances. उसके कंपैरिजन में अगर ये छोटा है तो ये डेफिनेटली जो एक्चुअल वैल्यू होगी H3O प्लस फ्रॉम ये वाटर डिसोसिएशन, वो इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा रहेगा, यानी वो नेग्लेक्ट होगा. सो H3O plus net will be H3O plus from acid dissociation plus 3O plus self dissociation of acid, water. ठीक है. However, this term will get neglected
injected as much small compared to P alpha equal to 10 to the power. So H3O plus net जो होगा हमारा that will be equal to 10 to the power minus 3 molar. OH minus का concentration क्या होगा? OH minus का concentration will be 10 to the power minus Kw by concentration of H3O plus, that is equal to 10 to the power minus 14 divided by 10 to the power minus 3 is equal to 10 to the power minus 11. Making sense? The final answers. pH अगर निकालना है तो pH will be equal to minus log H3O plus, which is equal to 3. POH, this will be equal to 14 minus pH, that is 14 minus 3 is equal to 11. क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं करने के लिए, काइंडली डू दैट. ये नोट कर लिया? हेलो, हैव वी नोटेड इट? Yes, sir. ओके. Calculate pH of 10 to the power minus 8 molar HCl solution. Can we calculate this?
Yes, approximately 6.9. ठीक है, कैलकुलेशंस कैसे होंगे? HCl के dissociation से HCl being dissolved in water will get fully dissociated to produce H3O plus and Cl minus ion. Each of them will be equal to 10 to the power minus 8 molar, 10 to the power minus 8 molar. This entity is not going to create any problem for this. Then there will be self-dissociation of water which will be taking place. H3O plus plus OH minus. This is initially 10 to the power minus 8 molar. This is 0, 1 and 1. This is initial at equilibrium after dissociation of X amount of H2O. This will still be 1, 1. This will become 10 to the power minus 8 plus X, and this will remain X. Coming from water dissociation, then Kw will become equal to 10 to the power minus 8 plus X into X, that is X square plus 10 to the power minus 8X is equal to 10 to the power minus 14. That implies X square plus 10 to the power minus 8X minus 10 to the power minus 14 is equal to 0. X is equal to minus 10 to the power minus 8 plus minus root under 10 to the power minus 8 का whole square plus 4 into a, that is 1 into 10 to the power minus 14 by 2. सॉल्व करेंगे 10 to the power minus 14 को बाहर लेकर के 10 to the power minus 7. So this will be minus 10 to the power minus 8 plus minus 10 to the power minus 7 multiplied by 10 to the power minus 2 plus 4 by 2.
this is equal to 10 to the power minus 7 को बाहर ले लेंगे. This will become minus 10 to the power minus 1 या फिर इसको minus 0.1 plus minus root under 4.01 by 2. ये नंबर लिख लो. रूट अंडर 4.01 जो है, this will simply become equal to uh, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, यानी 4 इसमें से हम बाहर निकालते हैं, तो दिस विल बिकम 10 to the power minus 7. आई मीन ये सॉल्विंग टेक्निक से सिंपली है, या फिर आप सीधे सीधे 4.01 को 4.01 का अगर हम लोग रूट लेते हैं, तो द वैल्यू विच वी आर गोइंग टू गेट इज 4.01. द आंसर इज multiplied by minus 0.1 plus minus 2.0025. ठीक है, कैलसी से 49 आएगा, 25 मैं ले रहा हूँ फॉर सम रीजन. इसको अगर मैं बिना कैलकुलेटर यूज किए हुए करना चाहूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लेंगे. बेसिकली ये 4 इंटू 1.0025 आ जाएगा. ठीक है, तो रूट रहेगा, सो 4 will come out, it will become 2 root under 1.0025. ठीक है, root under 1.0025 is nothing but it's 1.00125. ठीक है, कैसे? 1 plus 0.0025 है, this number is much smaller than 1. इसका raised to the power half जो होगा, that will simply be equal to 1 plus half into this number. ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.0025. ठीक है, विच इज दिस नंबर 249 मैंने बोला था आया है, उसको 25 लिख रहा हूँ. सो आई एम गेटिंग दिस नंबर. इसमें से 0.1 को माइनस कर लेंगे, इसका निगेटिव वाला वैल्यू तो नेग्लेक्ट ही हो जाएगा, दैट विल बी ऑफ नो यूज, so will not care about that. X is going to be equal to 1.902 divided by 2 into 10 to the power minus 7, or this is equal to ये 0.95 into 10 to the power minus 7 or 9.5 into 10 to the power minus 8. This is the x value of x, or the contribution which we are getting from water dissociation. ठीक है, total H3O plus क्या होगा? H3O plus net will be equal to 10 to the power minus 8 coming from acid dissociation plus H3O plus coming from dissociation of water, that is 9.5 into 10 to the power minus 8. The two will be added up to get 1 plus 9.5 into 10 to the power minus 8, that is
10.5 into 10 to the power minus 8, that is 1.05 into 10 to the power minus 7. ठीक है, और देन pH की बारी आई तो pH is equal to minus log 1.05 into 10 to the power minus 7. This will become 7 minus log 1.05, that is equal to the value for this is 7 minus 0.02, that is 6.98. Clear here? It will be just slightly lesser than 7. ठीक है? Is this calculation clear to all of us? Hello? Yes, sir. So we did two calculations. पहला तो ये weak acid वाला किया, दूसरा strong acid with very small concentration किया, और एक आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, थोड़ा कंसंट्रेशन और कम करके अगर मैं देता हूँ, से वीक एसिड लेता हूँ, 10⁻⁵ वाला लेता हूँ, ये घर से एक बार ट्राई कर लोगे. क्वेश्चन फाइंड पीएच, पीएच के बदले ठीक है पीएच ही लेते हैं. फाइंड पीएच ऑफ अ वीक बेस having concentration 10 to the power minus 5 molar, and Kb is equal to 10 to the power minus 8. ठीक है, इसके लिए pH निकालना है, यानी पहले POH निकालेंगे आप लोग, with keeping in mind all the approximations, and then accordingly calculate करके देखेंगे कि POH का contribution from base dissociation is lesser than 10 to the power minus 7 or not, or how different it is. 10 to the power minus 6 से कितना कम या कितना ज्यादा है. अगर 10 to the power minus 6 से कम है, it is approaching toward 10 to the power minus 7, then dissociation of water will also be incurred, or it will be utilized to calculate the net H3O plus from the solution. Making sense? यहाँ तक की बात हमें समझ में आई? Yes, sir. ओके, ठीक है. सो ये वाली चीज को हम लोग सॉल्व करके लाएंगे. फॉर टुडे वी आर फिनिशिंग आवर लेक्चर एट दिस पॉइंट. कल के दिन में आई विल बी, वो बताया था ट्रेंड्स वगैरह बताऊंगा मैं एसिड एंड बेसिस का, इनऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस का, दैट आई विल बी डूइंग टुमारो. ठीक है, एंड ओके, एक चीज इसमें और भी मुझे करना होगा, वो होगा पॉलीप्रोटिक एसिड्स वगैरह का डिसोसिएशन कैसे होता है, और वो चीज थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, उसका डिसोसिएशन. ठीक है, तो कल दो चीज, एक पहले पॉलीप्रोटिक एसिड्स का डिसोसिएशन क्वांटिटेटिव कैसे होता है वो देखेंगे, और उसके बाद दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे एसिड बेस ट्रेंड्स. ठीक है, एंड पॉलीप्रोटिक एसिड बेस ट्रेंड्स के बाद नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट हैविंग लुक एट what will happen if we are going to dissolve salts into water. ठीक है, that is hydrolysis of salt. Fine. Bye for today.